कर्नाटक रे बढ़िला सरकार अड़ुआ मुस्लिम कंट्राक्टर मानक पई 4% संरक्षण घोषणा। कर्नाटक सरकार निष्पत्ति को बीजेपी रो जोरदार विरोध। कांग्रेस रो निष्पत्ति देशर सुरक्षा और एकता प्रति विपद। असंवैधानिक पदक्षेप को नहीं राजरास्ता को ओह्लाइब बीजेपी। विधानसभा पार्लियामेंट पर्यंत अगणतांत्रिक निष्पत्ति हेब प्रतिवाद। कर्नाटक सरकार मुस्लिम कंट्राक्टर मानक पई 4% संरक्षण को नहीं जोरदार विरोध करिछि बीजेपी। राज्य सरकार एपरी निष्पत्ति को कड़ा समालोचना करिसेंती बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य। केवल भोट बैंक हातेबा को कर्नाटक रे सिद्धरामैया सरकार तुष्टिकरण राजनीति रे मातिछंती। एथिपई कांग्रेस रो वरिष्ठ नेतांक सह राहुल गांधी समर्थन रहिछि। कांग्रेस रो निष्पत्ति देशर सुरक्षा और एकता प्रति विपद। संविधान प्रणेता बाबा अंबेडकर एहाको कड़ा विरोध करुथिले। एभली असंवैधानिक पदक्षेप पई कोर्ट रे मामला रुजु कराजिब। विधानसभा और विधानसभा बाहर प्रतिवाद कराजिब। पार्लियामेंट रे ए प्रसंग मध्य उठाजिब। जे पर्यंत एभली असंवैधानिक निष्पत्ति को प्रत्याहार करा न जाइछि से पर्यंत प्रतिवाद जारी रहिब। लोकंक समर्थन रे राजरास्ता रे बीजेपी प्रतिवाद करिब बोली बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य कहिसंती। On the basis of religion is unconstitutional, is blatantly illegal and has the potential of threatening the country's national unity and security. The framers of the constitution, including Dr. Baba Saheb Ambedkar, had opposed this idea tooth and nail. Ambedkar had called this idea of religion-based reservation as a fatal dose against national integrity. He said such an idea will lead to the balkanization of India. It is an irony that those who claim to be champions of Baba Saheb Ambedkar's legacy are destroying the very same legacy by implementing those very ideas that he opposed in his lifetime. See, ever since the Congress government has come, it is only appeasement governance. They are not governing for the whole 6.5 crore Kannadigas as a state. They are trying to divide on a religious lines. See, if they want to develop a section of the society who are below poverty level, it should be level playing field for everybody. Don't divide on religious basis. You speak constitution on one side and you do exactly the opposite of what constitution says. मुस्लिम कंट्राक्टर मानक प्रति संरक्षण को नहीं कर्नाटक सरकार ऊपर बर्षिछंती बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सबुबले संविधान द्वाही देउथबा बेले तांको दल धर्म भित्तिरे संरक्षण घोषणा करिछि। सेमानक कथा ओ कामरे अनेक फरक रहुछि। भारतीय संविधान रे धर्म भित्तिरे संरक्षण पई अनुमति नाही। कांग्रेस रो एभली पदक्षेप देश पई क्षतिकारक बोली से अभियोग करिछंती। In Karnataka is openly violating constitutional ban on religious-based reservation, the Supreme Court ban on religion-based reservation, and he is happy that his party is doing so. This is again a classic case of the Congress party speaking with one voice about the constitution, but doing something exactly 180 degrees opposite and violating the constitution. They are today a party that has only got a strategy of appeasing. 4% reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. So earlier it was there for some percentage for some scheduled caste, which we had made a constitution type in the Assembly amendment, this one. Now we want to see that all the section also should be not be deprived. Only for small, only till 2 crores. The above things they can't do it. कर्नाटक सिद्धरामैया सरकार मुसलमान कंट्राक्टर मानक पई 4% संरक्षण लागू करबा सह मुख्यमंत्री मुस्लिम कॉलोनी विकास पांठी पई 1000 कोटी टंका देबाकू घोषणा करिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।